Hi guys, कैसे हो आप लोग? I'm भाग्यश्री. Welcome back to my channel BSM Learning Classes. Today topic is very interesting. In today's session, we will discuss about very good and interesting questions of logarithmic function. Watch the video till the end and don't skip. If you guys enjoy this video, like this video, share this video, and don't forget to subscribe. But as you know, before I start my class, I always have to recall all the previous topic. What we have learned in previous class. In the previous class, we are discussing logarithmic function part 1. So from that topic, we have derived the formula. We have just seen that previous video. So if you learn the concept, that topic, just go to the description box and click the link. Now student, logarithmic function and using some questions part 2. So but for students who think that they will not be able to solve mathematics question or math is difficult, I will first give all the easy questions and then we will move towards the difficult questions. I will not give you difficult questions directly, so there is no need to be afraid of maths. Now start logarithmic function part 2. Part 2 पहला question, tan x y equal to tan x log x cube. So both side derivative, then both side logarithm function use both side, then ln y, ln a to the power b means b ln a, so ln tan x log x cube, so log x cube ln tan x, then log x cube means log a to the power b means b log a, so b means power 3 log x ln tan x. Then differentiating both sides with respect to x, d ln y by dx, then d 3 constant, so 3 d log x into ln tan x by dx, u into v. So 1 by dy means d ln y by dy into dy by dx. So d ln y chain rule using, so d ln y by dx का मतलब है d ln y by dy into dy by dx. Then dy d ln y का फॉर्मूला क्या होगी, 1 by y into dy by dx, then 3 log x into ln tan x means u into v constant, u का डेरिवेटिव means ln tan x constant, d log x by dx plus log x constant, then d ln tan x two function, ln function trigonometry function, but first function, second function, first function derivative, then second function as usual behave like x. So second function derivative, then first function chord. So ln tan x by d tan x, first function chord, then d tan x by dx. Then one by y dy by dx, 3 ln tan x into 1 by x plus log x 1 by tan x into tan x sec square x, then dy by dx y 3y means y का वैल्यू कितना है, tan x log x to the power cube ln tan x by x plus log x by tan x into sec square x equal to 3 y tan x log x to the power cube. So यहाँ पर put y का वैल्यू tan x, then repeat this. So now discuss second question. Second question, two function सेपरेट है, सो इसलिए टू वेरिएबल कंसिडर. यू यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल, सो यू दिस वेरिएबल, वी दिस वेरिएबल, देन कंसिडर टू वेरिएबल. सो देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा. सो सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स दी पावर 1 by x प्लस
sin x to the power x. Then y equal to u plus v. u consider u, then consider v. Then dy by dx कितना होगी, du by dx plus dv by dx. Then dy y equal to x 1 by x. So u equal to x to the power 1 by x. Then logarithmic both side. Logarithmic both sides, using both sides. Then logarithmic function using both sides. Now both sides, so u equal to x to the power 1 by x. Then logarithmic function both sides. Then ln u equal to 1 by x. ln x to the power 1 by x. So 1 by x ln x. Then d derivative of both sides. So d ln u by dx. Then d 1 by x ln x by dx. Then ln u 1 by u du by dx. then यहाँ पर 1 by x ln x 1 by x ln x or otherwise d ln x by x means u by v dx. u by v का फॉर्मूला v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव मीन्स x कांस्टेंट u का डेरिवेटिव मीन्स d टू द पावर ln x d ln x का डेरिवेटिव dx बाय माइनस ln x कांस्टेंट dx का डेरिवेटिव बाय x स्क्वायर. एंड फाइनल आंसर u 1 by u into 1 by u into du by dx equal to x ln x means x into 1 by x. So x is 4, then 1 minus ln x by into x 1 means dx by dx 1. So x into 1 by x minus ln x into 1 by x square. So du by dx equal to u 1 minus ln x by x square. Then u कितना है, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू x to the power 1 by x. So u v, so x to the power 1 by x 1 minus ln x by x square. Then du by dx x to the power 1 by x 1 minus ln x by x square. Then using second function second verse. Then v equal to sin x to the power x. So ln v equal to both side using ln function. Then second first step both side using ln function. Second step differentiating both sides. So first function use both side ln function. Then ln function means ln v equal to ln a to the power b. ln a to the power b का फॉर्मूला क्या है, b ln a. So b ln a means x ln sin x. So then now differentiating both side. Then you write now differentiating both side. Then now d ln v by dx. So differentiating both side means d ln v by dx. Then dx into ln sin x u into v. So d u into v. So d ln v by dx क्या होगी, ln v means 1 by v into dv by dx. Then x u v means v constant, पहला v constant, v constant x का डेरिवेटिव, then u constant x constant v का डेरिवेटिव. v टू फंक्शन arises means एक फंक्शन ln है और एक फंक्शन sin x है, दो फंक्शन है. सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन as usual behave like x. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव होगी, so second function as usual behave like x. Then second first function cos. So if it's second function d sin x by dx. So dv by dx equal to v ln sin x dx by dx 1. So x into d ln sin x 1 by sin x cos x by sin x cot x. So v का फॉर्मूला है v sin x to the power x, v का वैल्यू sin x to the power x ln sin x plus x cot x.
then y equal to u plus b, then dy by dx कितना है du dv by dx, then du का वैल्यू h to the power 1 by x 1 minus x square फाइनल सोल्यूशन प्लस dv by dx का वैल्यू sin x to the power x ln sin x plus x cot x. Then now discuss third question. Similarly this type of question, so discuss third question solution क्या होगी थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सोच लो सोल्यूशन क्या होगी. सिमिलरली टू फंक्शन पुट मीन्स फर्स्ट पहला स्टेप लॉगरिथमिक फंक्शन यूज, देन अनदर स्टेप डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. सो थर्ड फंक्शन y इक्वल टू सेक इंडिविजुअल लेंगे टू, यहाँ पर टू फंक्शन इंडिविजुअल है इसलिए वेरिएबल कंसीडर होगा u और v. यहाँ पर टू फंक्शन इंडिविजुअल नहीं है मीन्स ब्रैकेट में है इसलिए वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा. सो दिस फंक्शन यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ साइड यूजिंग ln y इक्वल टू ln a टू द पावर b मीन्स sec x tan x to the power cot x, then cot x ln sec x plus tan x, and then both side using differentiating both side using derivative both side, then d ln y by dx d cot x ln sec x plus tan x by dx. Then u into v का फॉर्मूला v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव d ln y by dx means chain rule using means d ln y by dy into dy by dx. So d ln then 1 by y into dy by dx equal to ln sec x plus tan x into d cot x by dx plus cot x into u constant v का डेरिवेटिव v d ln sec x plus tan x. टू फंक्शन, पहला लॉगरिथमिक फंक्शन सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. सो फर्स्ट using logarithm function, then as usual we apply x, second function is constant. So first function ln sec x plus tan x, ln sec 1 by sec x into tan x into d second function का डेरिवेटिव second function d sec x plus tan x into d sec x plus tan x by dx. So d sec x by tan x plus tan x by dx. So then separate d sec x by dx plus d tan x by dx. Then final solution or final answer dy by dx, then y sec x plus tan x to the power cot x, y का वैल्यू sec x plus tan x to the power cot x, then repeat this ln sec x plus tan x minus cos square x, then plus cot x into 1 by sec x plus tan x into d sec x by dx. d sec x का फॉर्मूला कितना है, d sec x का फॉर्मूला sec x into tan x plus d tan x का फॉर्मूला sec square x. So now put this formula, sec x का फॉर्मूला sec x into tan x plus sec square x. Final answer. Then fourth question discuss. Fourth question 2 to the power x 1 plus root over x. थोड़ा सोच लो कैसे होगा. वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक कर देना. फोर्थ नंबर क्वेश्चन y रूट 2 to the power x, y इक्वल टू 2 to the power रूट ओवर x. पहले इसको सॉल्व करो. 2 रूट ओवर x 1 रूट ओवर x 1 प्लस रूट ओवर x कितना होगी 2 रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x कितना होगी x means x to the power half plus half then 2 by 2. So x to the power half plus half, then x 2 by 2, then x to the power 1. So x to the power 1, and then put logarithm function using both side logarithm function or ln function ln y ln 2 root over x plus x, both side using logarithm function. Then ln a to the power b means b ln a, so b root over x plus x ln 2
then using derivative, differentiating both side, then using differentiating both side. d ln y by dy into dy by dx और d ln y by dx जो लिखना है लिख लो. रूट ओवर एक्स मीन्स u, v मीन्स v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव, u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव, पहले v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव देन u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव, d ln 2 कांस्टेंट, सो d ln 2 का d कांस्टेंट बाई dx कितना होगी 0. सो 1 by y dy by dx, चेन रूल यूजिंग d ln y by dy into dy by dx. सो d ln y का फॉर्मूला कितना हो जाएगी 1 by y into dy by dx इक्वल टू ln 2. ln 2 d रूट ओवर x प्लस x, रूट ओवर x प्लस x सेपरेट, प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एक्स डी ln 2 कांस्टेंट, सो d कांस्टेंट बाई dx 0, सो d कांस्टेंट बाई dx 0, नाउ पुट 0, देन dy by dx इक्वल टू y ln 2 रूट ओवर d रूट ओवर x मीन्स 1 by 2 रूट ओवर x प्लस 1, देन y कितना है y 2 रूट ओवर x, पुट द वैल्यू, y का वैल्यू पुट करो ln 2 रूट ओवर x प्लस 1. दिस फाइनल आंसर. देन क्वेश्चन 5 डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस. पहले सोच लो क्या होगा इसका सॉल्यूशन. एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2/3, 3x मीन्स एक फॉर्मूला में बोल देती हूँ, एक फॉर्मूला ln a, सपोज a टू द पावर b, c टू द पावर d, e टू द पावर f, देन क्या होगी ln फंक्शन यूज, देन क्या होगी इनटू, इसलिए प्लस ln a टू द पावर b प्लस ln c टू द पावर d प्लस ln e टू द पावर f, देन ln a टू द पावर b. अभी मैं बताई थी ln a टू द पावर b का फॉर्मूला क्या होगी b ln a, सो b ln a, सिमिलरली b ln c, सिमिलरली f ln e, देन पुट दिस फॉर्मूला, पुट 5 नंबर क्वेश्चन. सो 5 नंबर क्वेश्चन देख लो सोल्यूशन क्या होगी. पहले थोड़ा सोच लो सोल्यूशन क्या होगी, किस तरह करना है थोड़ा सोच लो. 5th नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2/3 इंटू 3x प्लस 1 1/4 इंटू रूट ओवर x मीन्स क्या है x टू द पावर हाफ. सो नाउ पुट x टू द पावर हाफ, देन लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ साइड, देन ln y ln x स्क्वायर प्लस 1 2/3, 3x प्लस 1 1/4 x टू द पावर हाफ, देन ln x स्क्वायर प्लस 1 2/3. सो ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोल लो, ln यहाँ पर ln a टू द पावर b, c टू द पावर d, e टू द पावर f, ब्रैकेट खोलने से क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, इसलिए प्लस. सो ln x स्क्वायर प्लस 1 2/3 प्लस ln 3x प्लस 1 1/4 प्लस ln x टू द पावर हाफ, देन ln a to the power b means b ln a, so 2/3 ln x square plus 1, then plus ln a to the power b means b ln a, ln a to the power b means ln x, then differentiating both side, d ln y by dy by dx, 2/3 constant, so 2/3 डेरिवेटिव ऑफ d ln x square plus 1, so 2 फंक्शन, एक ब्रैकेट फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन सेकंड फंक्शन,
Bracket function constant means second function constant as usual behaves like x and first function derivative. So d ln x square plus 1. So dx square plus 1. Dx square plus 1 by dx. Y by dy into dy by dx. Then 2 by 3 constant. So 2 by 3 into d ln x square plus 1. Two function arises. पहला function logarithm function, second function bracket function. So two function second function is as usual behave like x because second function is constant. So d ln x square plus 1 by dx square plus 1 into dx square plus 1 by dx plus similarly 1 by 4 into d ln 3x plus 1 by d 3x plus 1 into d 3x plus 1 by dx plus similarly 1 by 2 d ln x by dx. Final answer. So वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना. क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक बटन में प्रेस कर दो. Then d ln y d then ln y dy means 1 by y into dy by dx equal to 2 by 3 1 by s square plus 1 into separate ds square by dx plus d1 by dx. Then equal to 1 by 4 1 by 3x plus 1 into 3x d 3x by dx plus d1 by dx. Then half d ln x by dx. d ln x का formula 1 by x. So now put 1 by x. Then final answer. Then final answer dy by dx equal to y 2 by 3 1 by s square plus 1 into 2x plus 1 by 4 1 by 4 1 by 3x plus 1 into 3 plus 1 by 2 or x by 2. Then y x square plus 1 y का वैल्यू putting y value put the formula, get the answer. Formula put करो, आंसर लिख लो. 2 by 3 1 2x 2 2 means 4x. So 4x 3s square plus 1 plus 3 by 4 1 by 3x plus 1 plus x by 2. Final answer x square y का value putting y value x square plus 1 2 by root over to the power 2 by 3 3x plus 1 to the power 1 by 4 root over x. Then 4x by 3 x square plus 1 plus 3 by 4 1 by 3x plus 1 plus x by 2. Final answer. This keep question the final answer. For today, this much only. The other part of this chapter uploaded soon. So to catch our new videos, subscribe my channel and hit the bell icon to get notified. Thank you and keep supporting us.